Okay, starting with the first question. Which of the following process uses water gas shift reaction for industrial preparation of dihydrogen? Water gas shift reaction. Merck's process, Lane's process, permuted process, or Bosch process? Yes. Gosh. The answer is Bosch process. Now, whenever we solve the limited MCQs, just make sure the other options, why they are wrong, and with what concept or reaction they are associated with it, you should always know that. मतलब इसका आंसर बॉश प्रोसेस तो है, लेकिन बाकी तीन प्रोसेसेस किसके रिलेटेड है, यू शुड ऑलवेज नो दैट. सो इससे क्या होगा, आपके और भी तीन कॉन्सेप्ट्स जो है रिलेटेड टू द नेम्स ऑफ द प्रोसेसेस, they also get revised. So now, Merck's process is related with preparation of hydrogen peroxide, and the reaction of sodium peroxide in acid H2SO4 giving sodium sulfate and hydrogen peroxide is called Merck's process. Lane's process is preparation for dihydrogen, wherein iron is added with water at a very high temperature in the presence of nickel as catalyst. It gives you Fe3O4, a mixed oxide, and the release of dihydrogen gas. Permuted process is related with softening of hard water. In fact, it was also named as ion exchange or zeolite process. Permuted is also called as ion exchange or zeolite process, and it is related with softening of the hard water. So this was the zeolite process wherein NaZ is the zeolite, जहां पर Z relates to AlSiO4 anion, that is aluminosilicate. So basically hydrated sodium aluminium aluminosilicate is called as the zeolite. And zeolite क्या करता है, hard water से magnesium and calcium ions को exchange करता है. So with this ion exchange reaction, what will happen? The magnesium and the calcium forms a zeolite complex and the sodium ions are set free. अब यहाँ पर दो points important थे ion exchange process में. The zeolite will be exhausted when all the sodium ions will get consumed. Zeolite पूरा खत्म कब होगा, जब सारे sodium ions consume हो जाएंगे. And to regenerate the zeolite, this Mg or CaZ2 is added with sodium chloride. तो NaCl के थ्रू क्या होता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाता है, and we get twice of NaZ, thereby regenerating the zeolite. That's it. So ion exchange or zeolite or permuted process is nothing but the process related with softening of hard water. In this, the zeolite which we use is nothing but hydrated sodium aluminium silicate, which is represented by NaZ. It exchanges the calcium and magnesium ions from the hard water and forms a complex with them. And here the zeolite is said to be exhausted when all the sodium ions gets consumed. And to regenerate the zeolite, we have to add NaCl. That's it. Now this was the Bosch process. Bosch process में coal or hydrocarbon is added with steam, that is water heated to a high temperature of 1270 Kelvin. So what happens over here is the carbon takes away the oxygen and forms a mixture of carbon monoxide plus hydrogen, which is also called as water gas or synthetic gas, which is used for synthesis of many important industrial chemicals. So it is called as water gas or syngas. Then this water gas के through hydrogen का output बढ़ाने के लिए it is further added with water in the presence of iron chromate as catalyst,
And here the monoxide gets converted into CO2 and there is production of hydrogen. Now this CO2 has to be removed, so it can be removed by dissolving in water, or it can be removed by scrubbing with sodium arsenite solution. CO2 is removed by scrubbing with sodium arsenite solution or by absorbing an alkali, because CO2 क्या है, एक acidic oxide है, and this acidic oxide could be removed by dissolving in the alkali or by scrubbing with sodium arsenite solution. So इसी process को Bosch process बोलते हैं. It is also called as coal gasification followed by water gas shift reaction. The first step over here is called coal gasification, and through that when we convert the monoxide into dioxide, it is called water gas shift reaction. Understood? So through one MCQ, we have revised 4 of the important processes. So the answer to this is Bosch process. H2O2 cannot act as oxidizing, reducing, dehydrating, or acid. Peroxide cannot act as what? Dehydrating agent. Dehydrating agent. Perfect answer. Because peroxide में the oxygen का oxidation state is -1. -1. So -1 ऊपर भी जा सकता है, that is 0. नीचे भी आ सकता है, -2. So any element in which the oxidation state is in the middle, it can act as both oxidizing and reducing acid. Further, H2O2 जो है, it's a weak dibasic acid, so it definitely act as an acid also, but it doesn't act as a dehydrating agent. So in H2O2, the oxidation state of oxygen is -1, which can either be increased to 0 or decreased to -2, and that's why it can behave as both. And it also acts as a bleaching agent. उसके अलावा it's a weak dibasic acid. Answer is dehydrating agent. So H2O2 oxygen release करता है, इसके लिए it is also a bleaching agent. Which of the following metal does not produce dihydrogen with dilute HCl? कौन dihydrogen produce नहीं करेगा? Silver. Silver. And this was related to reactivity series, or you can relate with the electrochemical series. So reactivity series में the metals which are less reactive, they on reaction with the HCl will not produce the hydrogen gas. So the metals which are lying below H in the metal reactivity series cannot displace H from the acid as they are less reactive than hydrogen. And ऐसे examples कौन-कौन से हैं? Ag, HgCu, gold and platinum. Ag, HgCu, gold and platinum. These are all less reactive metals which are lying below H in the reactivity series or above H in the electrochemical series. Either way is correct. Answer is silver. Ortho and para hydrogen differ in. What is ortho and para hydrogen relation? Nuclear spin. They are nuclear spin isomers of hydrogen. अब फंडा क्या है? Let's see. So this is how we represent the spin isomers of molecular hydrogen. Yani we are here talking about H2 का isomers. So यहाँ पर प्रोटॉन स्पिन के बेसिस पे they are classified into ortho and para. Ortho मतलब the protons are spinning in the same direction, and para यानी they are spinning in the opposite direction. अब याद रखने के लिए आप ये याद रखो कि हमने para word ortho meta para word जो है बेंजीन में भी यूज किया था. So if a substituent is opposite to the reference one, then it is para. तो para का मतलब opposite. ठीक है. अब the proton spinning in the same direction will have more energy. So ortho hydrogen will be present or existing
at a high temperature, और पैरा जो है that will exist at a lower temperature. ध्यान रखना, स्पिनिंग सेम डायरेक्शन में है, रिपल्शन होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है. अब इसके बेसिस पे द पॉइंट्स आर वेरी सिंपल. Ordinary dihydrogen is an equilibrium mixture of both ortho and para. At 0 degree Kelvin, hydrogen contains mainly para, यानी लो टेम्परेचर पे पैरा ज्यादा स्टेबल है. रूम टेम्परेचर या वेरी हाई टेम्परेचर पे the ratio of ortho to para is in the proportion 3:1. हाई टेम्परेचर पे पैरा एग्जिस्ट करता है और वो 3:1 के प्रपोर्शन में एग्जिस्ट करता है, यानी 75% ऑफ द ऑर्थो कुड बी प्रिपेयर्ड. It has been possible to get pure para-hydrogen by cooling ordinary hydrogen to a very low temperature, close to 20 Kelvin, but it is never possible to get a sample of hydrogen containing more than 75% of ortho-hydrogen. तो para-hydrogen 100% तक अचीव किया जा सकता है, but ortho के लिए the max proportion is 75%. That's it. This is what you are supposed to remember with regards to ortho and para-hydrogen, which are the nuclear spin isomers of dihydrogen. Which of the following hydrides are non-stoichiometric in nature? Can you answer directly? Non-stoichiometric. Metal hydride. Metal hydrides, which are obtained from which block elements? D and F block. D and F block elements. So the moment you talk about hydrides, आपके दिमाग में आना चाहिए S block का saline hydrides, P block का covalent hydrides, D and F block का metallic या non-stoichiometric hydrides. ठीक है? So ionic hydrides was the name given to saline only. Molecular covalent hydrides का दूसरा नाम था. Interstitial non-stoichiometric का था. And covalent is same as molecular. The answer to this is option C. Metallic, interstitial या non-stoichiometric. All are related with D and F block का metallic hydrides. ठीक है? What is false about heavy water? So एक एक करके we'll see the statements. In fact, this covers all the important points related to heavy water. D2O. It is used as a moderator in nuclear reactors and in exchange reactions for study of reaction mechanisms. True or false? True. 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 Heavy water is used in slowing down the speed of neutrons, and that's why it's used as a moderator in nuclear reactors. An exchange reaction for the study of reaction mechanism, it is used in many of the deuterolysis reaction. ड्यूटोरोलाइसिस रिएक्शन, जैसे NaOH अगर heavy water से react करते हैं, which can be represented as DOD, then the hydrogen could be exchanged with deuterium to actually understand कि what H has been replaced in the reaction. mechanism में इसको identify करने के लिए हम exchange reactions में heavy water को use करते हैं. So it's a very important advantage related with heavy water. It can be prepared by exhaustive electrolysis of water. Yes. Yes. Heavy water can be prepared by exhaustive, matlab over and over again. If you do the electrolysis of water, you will be able to produce heavy water. It is obtained by fractional distillation of water. No. It cannot be obtained by fractional distillation of water. इसको हम सिर्फ केमिकली प्रिपेयर कर सकते हैं, फिजिकली डिस्टिलेशन मेथड्स के थ्रू सेपरेशन या प्रिपरेशन नहीं हो सकता. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वाटर हैज अ हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन D2O. Yes. Yes. Now, water versus heavy water में, if you look at the table, then in all the properties, heavy water had a higher magnitude.
लेकिन सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में वाटर का जो मैग्नीट्यूड था वो ज्यादा था D2O से। ये कंफर्म करता है कि वाटर इज यूज्ड एज अ गुड सॉल्वेंट एज कंपेयर टू द हेवी वाटर। दैट्स व्हाई द वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड एक और चीज याद रखो, हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। ज्यादा एसोसिएटेड होना मतलब उसका जो H बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है, इसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट्स और बाकी सारे प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी इज ऑल हायर। ठीक है, तो इन शॉर्ट द समरी वाज सिंपल, इन द एंटायर प्रॉपर्टीज टेबल वाटर वर्सेस हेवी वाटर में द वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू वाज हायर। बस। Okay, so we have one more point. Heavy water is more associated than ordinary water. It is correct. And the answer is option C. The reagent commonly used to determine hardness of water titrimetrically is oxalic acid, disodium salt of EDTA, sodium citrate, or sodium thiosulfate. Now coordination compounds is done and we have understood the use related with this. Reagent used to determine the hardness, estimating the hardness of water. EDTA. EDTA is the answer. Ethylene diamine tetraacetato. अब actually होता क्या है? Let's see. Disodium salt of ethylene diamine tetraacetic acid has been used for estimation of metal ions like magnesium or calcium by complexometric titrations. Complexometric titration matlab the titrations in which the complexes are formed. In this titration, indicator ions D3 ions form red metal indicator complex Md negative with M2 plus ions. मतलब जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है वो एक इंडिकेटर के साथ एड अप करते हैं जिसका कलर ब्लू होता है। On addition with that indicator, it forms a complex which has a red color. Now this red color complex adds up with EDTA and यहाँ पर ion exchange reaction होता है। मतलब here this is actually disodium EDTA which can be written as Na2 EDTA. Disodium matlab Na2 or EDTA. What will be the charge on this complex? -2. -2. So now for every 2 sodium ions, the number of calcium or magnesium ions exchanged would be, हर 2 sodium ions के लिए how many calcium ions would be exchanged? 1. 1. That's why when we talk about calcium forming the EDTA complex, the number of calcium ions in the complex is only 1, again with a charge of 2 negative. ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा भी है. So disodium EDTA is used in the estimation of hardness of water by the ion exchange reaction where the calcium or magnesium ion exchanges. And here it forms the metal EDTA complex and the indicator ion is regenerated. मतलब जो वापस blue color बन जाता है वो indicate करता है कि indicator ion is regenerated. The release of the free indicator ion is marked by a change from red to blue color. ठीक है, इतना डिटेल जरूरत नहीं है बट जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, या फिर कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सोडियम ईडीटी में हाउ मेनी सोडियम आयंस आर इन द कॉम्प्लेक्स, देन यू कैन आल्सो आंसर दिस एज 2 एंड कैल्शियम आयंस के साथ इट इज ओनली 1. The answer is disodium salt of EDTA. The incorrect statement about structure of peroxide is it's planar. Is the first statement correct? No, non-planar.
It is a non-planar structure. Okay, so आंसर यही होना चाहिए. आगे, dihedral angle in gas phase is 111.5 degree. It has an open book like structure, और उस open book का जो angle है, outer angle in gas phase, it is higher than the solid phase. और ये angles अगर ध्यान दोगे तो 111.5 and 90.2 degree respectively था, तो correct है. And it has open book non-planar structure, ये भी correct है. Here is the structure which is given in NCERT. So this is called as the dihedral angle. जो open book structure में ये वाला angle है, this is called dihedral angle. और इसका जो bond angle है, that is OOH. अब dihedral angle अगर gas phase में ज़्यादा है, तो OOH का जो bond angle है, if you observe just comparatively, then in the gas phase it is lesser and solid phase में ये higher होता है. ठीक है? तो in the NCERT, in the diagram, they have mentioned these angles clearly. That is why this angle का values are also important. But अंदर का जो internal angle है, उसके लिए you can just remember that OOH bond angle of H2O2 in which phase is greater? Solid phase. Solid phase is greater. बस ये comparison दूसरा आप याद रख सकते हो. ठीक है? So answer is option A. Very good question. In transforming 0.01 mole of PBS to PbSO4, the volume of 10 volume H2O2 required will be. And the options are given in ml. Now, how you go about this? What is the method जो आपको strike हो रहा है to solve this? Write the reaction. Write the reaction. Perfect. So let's write the reaction of PBS with H2O2. What would it give? PSO4 and water. PbSO4 and water. And PBS का दिया हुआ है 0.01 मोल and hydrogen peroxide 10V दिया है. So now we have to find the volume of peroxide required will be. What is 10V? H2O2 is called volume strength of hydrogen peroxide. इसके through we can find the molarity or normality or the percent weight by volume. ये सब कुछ find किया जा सकता है through the volume strength. Basically, if you are not balancing the reaction and solving it like without balancing, then the best method is to use of Equivalent. equivalence. And the oxidation states is changing from -2 of the sulfide to +6 of the sulfate and -1 of the peroxide to -2 of oxygen. So I'll just use the equivalence method of PBS with equivalence of H2O2. Now PBS का moles दिया है, so the formula to be used is moles into n factor, which is 0.01 times n factor. What is the n factor for PBS? 8. 8 equals to. Now volume strength जब दिया है, तो which formula here for equivalence I apply? Equivalence का मुझे volume ढूंढना है, तो which formula do I put here? Normality into volume. Excellent.
यहाँ पर मैं लूंगा n into v. Now how do you calculate normality for 10v H2O2? What was the formula? V by 5.6. Excellent. v by 5.6. तो जो 10v है उसको अपन 10 by 5.6 रख देंगे and this will be multiplied by v. That's it. Through this we will get the v यानी volume of hydrogen peroxide which is required for converting 0.01 mole of PbS into PbSO4. समझा? And this volume comes out to be 44.8 ml. Is the method clear? Yes. Write the reaction, apply the equivalence. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको डेटा में ही समझ में आएगा. मोल्स दिया है तो मोल्स इनटू n फैक्टर और 10v के थ्रू हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं. एंड सिंस वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम यूज द n into v का फॉर्मूला. The answer is 44.8 ml. In which of the following reaction peroxide acts as a reducing agent? Now इसका एक शॉर्टकट था. Peroxide as a reducing agent. What was the shortcut to write? Oxygen is formed. Oxygen is formed. Hence answers are. बोलो. 2 and 4. बस. तो simple trick क्या था? When H2O2 is acting as a reducing agent, the peroxide का oxygen will undergo oxidation और oxidation में O2 बनना चाहिए. ठीक है. और O2 के अलावा H2O बने ना बने उसको आपको नहीं देखना है. तो ट्रिक क्या था कि O2 बनना चाहिए. तो सेकेंड रिएक्शन में O2 बन रहा है, फोर्थ में O2 बन रहा है. That's it. Here the peroxide is acting as a reducing agent. Answer is C. Hydrogen peroxide in its reaction with KiO4 and NH2OH acts as what agent? What is the correct combination? Now यहाँ पर भी एक सिंपल ट्रिक है. KiO4 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब रिएक्ट करेगा, what will KiO4 undergo? Reduction. Has to undergo reduction because here the iodine is in its Highest oxidation state. तो अगर कोई स्पीशीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं. इट विल ऑब्वियसली अंडरगो रिडक्शन. अगर ये रिडक्शन अंडरगो करेगा तो पेरोक्साइड इन दैट केस विल एक्ट एज अ अरे भाई peroxide will Reducing act as a agent. reducing agent. Similarly in NH2OH नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट is -1 and here peroxide will oxidize this. तो जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो peroxide will act as oxidizing agent. So the correct combination is reducing and oxidizing agent and this is the reaction. जो potassium periodate है that reduces to potassium iodate and NH2OH का nitrogen will oxidize to nitric acid. So since the first reaction is basically having the reduction of KiO4, peroxide reducing agent है, दूसरे में oxidation है, तो it's an oxidizing agent. Answer is A. The funda क्या apply करना है? What should be your thought process in solving the MCQs? That is more important. Identify the reaction which does not liberate hydrogen. Reaction of zinc with aqueous alkali, does it liberate H2? Quick, yes or no? Yes. जिंक विथ अल्कली. जिंक एम्फोटेरिक है मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है और दोनों के साथ रिएक्शन करने पर H2 is released.
So zinc with HCl forms ZnCl to NH2 and NaOH के साथ zincate बनाकर H2 रिलीज करता है. In short, it does liberate hydrogen. ठीक है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता. Electrolysis of acidified water using platinum electrodes. Yes. Yes, it will give you the hydrogen gas at the cathode and the oxygen gas released at the anode, allowing a solution of sodium in liquid ammonia to stand. Yes. Now to stand मतलब अगर इस solution को ऐसे ही छोड़ दिया तो what will happen? The sodium and ammonia will react together to form Amide. sodamide and it will release the hydrogen gas. मतलब ये भी H2 को release करता है. And reaction of lithium hydride with B2H6 does not liberate hydrogen. यही आंसर है because lithium का hydride when reacts with B2H6 it actually converts it into a reducing agent which is LiBH4. LiBH4. So this is a reaction wherein LiH and B2H6 combines and it just forms an adduct, yani addition product of LiBH4. That is, it does not liberate hydrogen. Answer is D. आपको अगर पहले 3 रिएक्शन के बारे में कंफर्म है कि H2 रिलीज होता है, so if you are not aware about this particular reaction or not sure whether it gives out the hydrogen or not, then definitely 3 ऑप्शन अगर पता है तो आंसर तो मिल ही जाएगा. The correct statement among 1 to 4 regarding hydrogen as a fuel. So hydrogen economic related कुछ statements है. Let's see one by one. It produces less pollutants than petrol या gasoline. Correct or incorrect? Correct. Correct. Hydrogen less polluting है. A cylinder of compressed dihydrogen weighs approximately 30 times more than a petrol tank, producing the same amount of energy. Correct. Correct. Yes, because hydrogen में van der Waals forces होते हैं, तो उनको एक particular point के beyond compress नहीं किया जा सकता. So a cylinder of compressed dihydrogen would weigh approximately 30 times more than a petrol tank, producing the same amount of energy. It's a fact and it's very important. Dihydrogen is stored in tanks of metal alloys like NaNi5. Yes. Correct. Yes. In fact, ये एक बड़ा problem है in using hydrogen as a fuel because the cost of storing and the production is actually very, very high. तो economically ये viable नहीं है to be used as a fuel for all the purposes. ठीक है? On combustion, values of energy released per gram of liquid dihydrogen and LPG are 50 and 142 kilojoule respectively. Correct. It is not correct. It is interchanged. हाँ, it is interchanged. तो ये शायद values आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन उसमें एक statement clearly दिया है कि the energy released per gram on a weight to weight basis हाइड्रोजन का जो कंबशन का एनर्जी है that is 3 times of the other fuels like LPG, petrol, diesel. Remember that. On a weight to weight basis per gram of hydrogen का जो कंबशन एनर्जी है वो 3 times होता है as compared to LPG. इसलिए 142 हाइड्रोजन का है और 50 LPG का होता है. Yes, 1, 2 and 3 are correct statements. Fourth is not correct. Remember, hydrogen per gram जो energy release करता है, वो 3 times होता है as compared to what is released by other fuels. The hardness of water sample in terms of equivalent of CaCO3 containing 10 raised to -3 molar CaSO4 is, and CaSO4 का molar mass दिया है.
Now डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए मैंने एक सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था. Can you help me with that? Yes. अगर मास दिया होगा डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए तो गिवन मास अपॉन मोलर मास into 1 by the weight of water in grams, weight of water in grams, and multiply by 10 raised to 8. ये है सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला. ठीक है. अब having remembered this formula, how the DOH is calculated? It's very simple. 10 raised to minus 3 मोलार का मतलब होता है 10 raised to minus 3 मोल of CaSO4 dissolved in 1 liter. तो 1 लीटर डेंसिटी को अप्रोक्स 1 मानकर हम बोलेंगे 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन में मैं बोल दूंगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर. तो 10 raised to minus 3 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है. तो यहाँ पर वेट अपॉन मोलर मास इज नथिंग बट मोल्स. तो इसकी जगह आई विल सब्स्टिट्यूट 10 रेज टू माइनस 3. वाटर का वेट 10 रेज टू 3 है और मल्टीप्लाई करो 10 रेज टू 8 के साथ. तो वी गेट 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 10 रेज टू 8 विच इज इक्वल टू 100. दिस इज द DOH, डिग्री ऑफ हार्डनेस इन ppm. खत्म. समझा? weight upon molar mass into 1 by weight of water in grams. In grams important है, in grams important है, and then just multiply by 10 raised to 8 to directly convert into ppm. Understood? बोलो. Yes, sir. The strength of 11.2 V solution of peroxide. 11.2 V solution. परसेंटेज में स्ट्रेंथ फाइंड करना है. Now percent weight by volume का मतलब how many grams of peroxide is present in 100 ml of the solution. परसेंट का मतलब क्या? weight by volume में आपको फाइंड आउट करना है. Now 11.2 V का मतलब molarity of hydrogen peroxide, the formula of which is V upon 11.2. अर्लियर हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज किया था जिसमें n फैक्टर 2 होता है. सो नॉर्मेलिटी इज अपॉन 5.6, मोलैरिटी इज अपॉन 11.2. तो डायरेक्टली वी गेट 1 मोलर, एंड 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर ऑक्साइड यानी 34 ग्राम 1000 ml में. तो 100 ml में 3.4 ग्राम. तो द अमाउंट ऑफ peroxide in 100 ml is nothing but its percentage weight by volume. Hence the answer is option A. Simple. तो दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं हाइड्रोजन चैप्टर से. वन इज दिस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन peroxide एंड अदर इज डिग्री ऑफ हार्डनेस. बस. In comparison to zeolite process for removal of permanent hardness, the synthetic resins method is less efficient, more efficient, and what is the reason? Factual है. Synthetic resins method is less efficient. The No. C option. C option. It is more efficient because zeolite या ion exchange method में, as we have already discussed in the start, it only exchanges the cations. But synthetic resins method में, the cations and anions both are exchanged through the cationic resin and the anionic resin. And at the end, there is a pure distilled water which is formed through the combination of H plus and the OH minus ions. ये फर्क है synthetic resins method में. It is more efficient because it can exchange both cations and anions through the anionic and the cationic resin.
What is false about ice? एक एक करके. It has 3D hydrogen bonded open cage like structure. True or false? 3D hydrogen bonded open cage like structure. True. It is true. हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं वाटर के बीच में एंड आइस जो कि सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें देयर आर मेनी वेकेंट स्पेसेस व्हिच गेट्स डेवलप्ड एंड इन दोस वेकेंट स्पेसेस द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी फिल्ड and that is the reason ice has a density which is Lesser than. lesser than water. It has less density than water, correct? Each oxygen is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atoms. What about this? That's right. That's right. Because water के केस में we have HOH. अभी ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है उसके साथ the H of another water molecule is associated. And यहाँ पर भी through the H bonded there is one more water which is associated. तो इस ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन सराउंड कर रहा है and because the hybridization is sp3 it is tetrahedrally surrounded. Correct statement. Each So, but it's oxygen written atom. oxygen atoms are there around it in the third statement. हाँ हाँ. Okay, तो No, sir, it's an NCRT line. It's the same only. हाँ प्रॉब्लम क्या है each oxygen is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atoms. मतलब यहाँ पर they are considering the oxygen with respect to the water molecules. तो actually ये गलत ही statement है. It should be surrounded with the hydrogen atoms. In fact यहाँ पर क्या होगा? This H will also be attracted to the oxygen and ये H भी attract होगा to the oxygen. ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है? वन वाटर इज सराउंडेड विद 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ईच ऑक्सीजन की जगह द करेक्ट स्टेटमेंट वुड हैव बीन ईच वाटर इज सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स, वैसा कुछ. बट ये करेक्ट स्टेटमेंट है एज पर एनसीईआरटी लाइन, दैट इज व्हाई वी हैव टू कंसीडर इट करेक्ट. अगर ये करेक्ट है तो ऑप्शन डी गलत होगा. ईच ऑक्सीजन एटम हैज 4 H bonds around it. One oxygen is having how many H bonds? दो ना. 2 hydrogen are covalent and 2 hydrogen are H bonded. So it will have 2 H bonds, not 4. Answer D है. But ये third statement is a correct statement as per NCERT line. Doesn't make sense, but it's given in NCERT and it has been asked in the MCQ and it has been accepted as a correct statement with error also. Each oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atoms. What is false about saline hydrides? किसको बोलते हैं saline hydrides? The ionic hydrides obtained from S block elements are itself called saline hydrides. They are binary compounds of metal and dihydrogen. Yes. They are crystalline and non-volatile. Non-volatile मतलब have a high boiling point. ये भी correct है. Their melt liberates hydrogen gas at cathode. Now, saline hydrides के case में the hydride यानी H has a negative charge. So this exists as an anion and as an anion it will move towards the anode. Anode पे होगा oxidation and oxidation में the H minus will be converted to H2 gas. तो in all the other electrolysis reaction जहां hydrogen H plus के form में exist करता है
There is always liberation of hydrogen at cathode, but in case of hydrides, the hydrogen is always liberated at anode and not cathode. So यही आपका false statement है, and it's very important. LiH, BeH2 and MgH2 are covalent. Yes, Fajan's rule के according ये सारे covalent hydrides में classify होते हैं. Clear? So that covers hydrogen का important MCQs, and now we move to the S block elements. So S block में बहुत सारा content है. I've just tried to compact the entire content with the MCQs. तो यहाँ पर just इतने MCQs भी करके जाओगे तो आपका पूरा chapter in all with the important points जहाँ से MCQs अब तक पूछे गए हैं वो सारे cover हो जाते हैं. Let's see. The ionization enthalpy of alkaline earth metals is greater than alkali metals but less than group 13, less than alkali metals, greater than 1 and 13 both, या equal to alkali metals. Yes, ionization enthalpy of AEM, alkaline earth metals, group 2 elements, is now alkaline earth metals have a stable filled configuration. Hello, are you all there? Yes, sir. Alkaline earth metals have a filled and a stable configuration, due to which the electron removal from them is difficult. अब left to right अगर हम trend देखें तो along a period left to right the ionization enthalpy goes on increasing. तो उसके basis पे alkaline earth metals का जो ionization enthalpy है that is what can you say? देखो पहले आता है AM, फिर आता है AEM और फिर आएगा अपना P ब्लॉक का ग्रुप 13. ठीक है, तो अगर थियोरेटिकली हम जाए तो लेफ्ट टू राइट में द आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो AEM का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 से कम है और अल्कली मेटल से ज्यादा है. बराबर. Yes or no? But the problem is सेकेंड पीरियड में जब हम ट्रेंड को देखते हैं तो बिकॉज ऑफ द फील्ड कॉन्फ़िगरेशन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज intermediate, but it is greater than both alkali metals as well as the group 13 p block element that is boron. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, this is 2s2 and this is 2s2 2p1. तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल यहाँ पे काफी डिफिकल्ट होने वाला है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, इनफैक्ट दोनों से ग्रेटर रहता है. सो द आंसर इज ग्रेटर देन बोथ elements of 1 and 13, a very important exception. Second, third and fourth period तीनों के लिए same exception is valid. In fact, exception आपका ionization enthalpy का group 2 और आगे चल के group 15 दोनों में ही exist करता है. यहाँ पे stable filled configuration completely filled वाला है और यहाँ stable half filled configuration के basis पे आ जाता है. Gypsum on heating to 390 Kelvin gives what is gypsum? CaSO4.2H2O. CaSO4.2H2O. अब जब आप इसको हीट करते हो below 120 degree Celsius, then it forms POP, plaster of Paris. और उसके ऊपर के टेम्परेचर को अगर आप हीट करोगे
then it will form the dead burnt plaster, which is anhydrous form of CaSO4. And this is the associated reaction. CaSO4.2H2O is gypsum. On heating to 110 to 130 degrees Celsius, it forms POP, and above 130 degrees Celsius, it forms CaSO4, that is dead burnt plaster. Clear? So it will here form POP because it is in the range of 110 to 130 degrees Celsius. Microcosmic salt is factual. Microcosmic salt is sodium ammonium biphosphate. Sodium ammonium biphosphate. And it is used as an analytical reagent in microcosmic salt bead test for identification of metallic radicals. ये हमारे syllabus के लिए नहीं है, but it's an analytical reagent which is used in the identification of metallic radicals. Mainly खाली इतना याद रखना है कि microcosmic salt क्या होता है, NaNH4HPO4.4H2O. Okay. Now, इस type के questions को solve कैसे करना है? Just understand the flow. When a substance A reacts with water, it produces a combustible gas B and a solution of substance C in water. When another substance D reacts with this solution of C, it also produces the same gas B on warming. But D can produce B on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature. A imparts a golden yellow color to a smokeless flame of Bunsen burner. A, B, C, and D are respectively. Can you tell me the answer? B. Bas. Because golden yellow color is itself the hint to understand this. Answer आपका B है, because golden yellow flame impart करता है सोडियम. ठीक है, अब अगर आप पूरे statement को समझोगे तो it's simple. When a substance A, which is sodium, reacts with water, it produces a combustible gas, which is hydrogen, and a solution of a substance C in water. तो ये आपका ये आपका B है, NaOH is C, and the substance A is sodium. Next, when another substance D reacts with the solution of C, D जब C से react कर रहा है, यानी NaOH के साथ, it produces the same gas B on warming. But D, यानी यही substance जिसकी बात कर रहा है, can produce B on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature. अब D एक ऐसा substance है जो अल्कली के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और दोनों केस में H2 रिलीज कर रहा है. So what does this confirm? This element is reacting with base as well as acid. मतलब ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है. सो एम्फोटेरिक में ये अल्यूमिनियम हो सकता था, जिंक हो सकता था, बेरिलियम हो सकता था, ये कोई भी एम्फोटेरिक मेटल हो सकता है. सो कॉन्सेप्ट क्या है? लुकिंग एट द स्टेटमेंट, ये कंफर्म होना चाहिए कि बेस और एसिड के साथ H2 रिलीज करने वाला जो सब्सटेंस है, इट हैज टू बी एम्फोटेरिक. Hence, the combination would be option B, sodium, hydrogen, the alkali, and the zinc as an amphoteric substance. The paramagnetic species is which is paramagnetic out of these? KO2. KO2, which is named as Potassium superoxide. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. तो अगर मैं वापस ऑक्सीजन के रिलेटेड बात करूं
तो ऑक्सीजन में there are two unpaired electrons as per the anti-bonding, or there are two unpaired electrons in the anti-bonding pi star orbitals as per MOT. और इस दो unpaired electron के basis पे O2 minus 1, which is a superoxide, will have one unpaired electron will be paramagnetic, but O2 minus 2 में दोनों pair up हो जाएंगे, तो this will be diamagnetic, and this is nothing but peroxide. Similarly, oxocations में O2 plus para होगा और O2 plus 2 dia होगा. So these three are paramagnetic and the extreme ones are diamagnetic. This is how you can understand. So the answer is CO2. In curing cement plasters, water is sprinkled from time to time. This helps in cement plasters में water is sprinkled from time to time because Option C. yes, it helps in developing interlocking needle-like crystals of hydrated silicates. तो basically जो hardening process होता है उसमें hydrated silicates बनते हैं which are having very strong interactions or bonds formed between them. Option C. A sodium salt of unknown anion when treated with MgCl2 gives a white precipitate only on boiling. The anion is, किसी का सोडियम सॉल्ट है जो MgCl2 के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी दे रहा है ओनली ऑन बॉइलिंग. कैन इट बी सोडियम का सल्फेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम का नाइट्रेट? It is sodium ka bicarbonate because the bicarbonates on treatment with magnesium chloride converts into magnesium ka bicarbonate, which can be decomposed on heating to form MgCO3 plus H2O and CO2. और ये MgCO3 जो है that will be forming a precipitate. अब सल्फेट्स का ऐसा केस नहीं होगा because sulfates are very stable to heat. They are not easily decomposed. वैसे ही कार्बोनेट्स में यहाँ पर स्टेबिलिटी होता है because carbonates of sodium, potassium, rubidium and cesium do not break down even on strong heating. खाली लिथियम का कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है. और नाइट्रेट्स में प्रेसिपिटेशन कोई नहीं होता है, इसलिए ये भी रूल्ड आउट है. So the answer is anion bicarbonate. A solid compound X on heating gives CO2 and a residue. The residue is mixed with water, forms a Y. On passing an excess of CO2 through Y in water, a clear solution Z is obtained. On boiling Z, compound X is reformed. The compound X क्या हो सकता है? On heating gives CO2 and a residue. Can you rule out the options on the basis of first statement? C and D. Because sodium and potassium के carbonates are stable to heat and they do not decompose. ठीक है. अब बाइकार्बोनेट का हीटिंग क्या देता है? बाइकार्बोनेट्स का हीटिंग क्या देता है? Bicarbonates on heating gives carbonate, water and CO2. Whereas carbonate of calcium on heating gives the quicklime, CaO oxide and CO2. ठीक है, तो solid compound X on heating gives CO2 and a residue. It can either of them. The residue mixed with water forms Y. अब इसमें रेसिड्यू कैल्शियम कार्बोनेट है और इसमें रेसिड्यू कैल्शियम ऑक्साइड है. What will happen when CaCO3 is dissolved in water? Doesn't dissolve. Doesn't dissolve because it forms a precipitate. ये तो rule out हो गया. But CaO mixed with water gives you calcium का hydroxide, which on passing with CO2
through Y in water, a clear solution Z is obtained, and that is of calcium bicarbonate. And then on boiling Z compound, X is reformed, which is nothing but calcium carbonate. Samjha? So the answer is option B. Understood. Which one of the following statement is true for the alkali metals? A very important question. Let's see the options. The nitrates decompose on heating to give NO2 and O2. Is it true? Quick. No. No. Because यहाँ पर lithium nitrate versus other nitrates का decomposition was giving you different products. Lithium nitrate on heating gives you Lithium oxide, NO2 and O2. lithium oxide and two gases are released, NO2 and O2. But बाकी metal nitrates जो है that gives you metal nitrite and just one gas is released. मतलब सबके लिए ये statement commonly correct नहीं है. So it is not a true statement, hence can't be the option. Their carbonates decompose on heating to give CO2 and metal oxide. Now this also isn't true because lithium का carbonate is the only carbonate of alkali metal जो decompose करता है. बाकी सारे carbonates जो है they are stable to heat. Sodium, potassium, rubidium के, cesium के carbonates do not decompose. There is no reaction for them. They react with oxygen to mainly give the oxide M2O. Will this be considered correct? लिथियम ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, and potassium and the other heavy metals form superoxides. So mainly giving the oxide is again incorrect अगर हम सारे alkali metals के लिए generally बात कर रहे हैं. They react with nitrogen to give nitrites. Can this be correct? I've kept 5 options over here. No. ये भी incorrect है because alkali metals में only lithium reacts with nitrogen directly to form the lithium nitride of the formula Li3N. ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको एक तो नाइट्रेट्स के बारे में पता चल गया, कार्बोनेट्स के बारे में पता चल गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, मतलब 4 केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई. और पांचवा क्या है, हैलोजेंस के साथ. और हैलोजन के साथ चाहे वो लिथियम हो या बाकी अल्कली मेटल हो, they do form the halides of the type Mx. This is only the correct statement. But this MCQ was important in a way that it is revising the 5 chemical reactions in short. Which of the following order about alkaline earth metals is incorrect? Incorrect. BeO is amphoteric while others are basic in nature. This is a correct statement because alkaline earth metals में in fact सारे S block elements में only beryllium or its oxide is amphoteric. बाकी सारे के सारे basic है. It's a correct statement. Enthalpy of formation of alkali metal fluorides become less negative down the group. Is this statement correct? Enthalpy of formation. Oh, ये alkali metal fluorides का दे दिया है. It should be alkaline metal fluorides. ठीक है. बट फ्लोराइड्स के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था, इफ यू लुक एट द ग्राफ, ओनली फ्लोराइड्स के लिए इट बिकम्स लेस नेगेटिव
while for chloride, bromide and iodide the reverse is true. मैं बताता हूँ ग्राफ में भी. Next, heating of hydrated salts of MgCl2 and CaCl2 causes dehydration. Now this is very important statement. MgCl2 का जो hydrated salt है वो हाइड्रोलाइसिस करता है, बट कैल्शियम क्लोराइड या बाकी के जो हेवी मेटल क्लोराइड सॉल्ट्स है दे अंडरगो डिहाइड्रेशन. And BeCl2 exists as a polymer in solid state and a dimer in vapor phase. Yes, it's correct. और इसके स्ट्रक्चर्स भी मैं बताऊंगा, ध्यान दो. तो सबसे पहले अल्कली मेटल फ्लोराइड्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लोराइड्स का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उनका ट्रेंड सेम है. तो as per this graph, the enthalpy of formation for the fluorides go on becoming less negative from lithium to cesium, but बाकी सब के लिए it is becoming more negative for the chlorides, bromides या iodides. अब यहाँ से मैंने solubility को relate किया था कि solubility of the halides is actually inversely dependent on enthalpy of formation. इसका मतलब lesser the enthalpy of formation, more is the solubility. More is the solubility. तो फ्लोराइड्स के केस में solubility जैसे जैसे enthalpy of formation कम होता है solubility बढ़ता है. तो ये सिर्फ फ्लोराइड्स के केस में ऐसा होता है और हाइड्रोक्साइड्स के केस में कि solubility down the group increases. बाकी सब केसेस में the solubility down the group goes on Increasing. नहीं, बाकी Decreasing. सब केसेस में डिक्रीजेस. और इसका रीजन क्या था? The enthalpy of formation increases. That is one factor, but Decrease those in solubility hydration के enthalpy is more than the lattice enthalpy. correct. The hydration enthalpy dominates over the lattice enthalpy, then only the salt is soluble. तो दोनों ही decrease होता है. But when the decrease in hydration enthalpy is more as compared to the decrease in the lattice enthalpy, the solubility goes on decreasing, and this is the trend observed for all the salts with the exception of hydroxides and fluorides. तो मैंने सिंपल वे में समराइज किया है कि solubility of all the all the salts goes on decreasing due to decrease in lattice enthalpy more as compared to the lattice enthalpy, but the exception is hydroxides and fluorides जिसमें the lattice enthalpy का decrease is more as compared to hydration, and उसमें एक और thermodynamic factor enthalpy of formation भी होता है. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ टू अंडरस्टैंड मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना है. नेक्स्ट, बेरिलियम का जो क्लोराइड है वो सॉलिड स्टेट में पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करता है और वेपर स्टेट में डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड इनफैक्ट 1200 केल्विन पे अगर आप इसको हीट करते हो ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ 1200 केल्विन, देन इट एग्जिस्ट एज अ मोनोमर BeCl2. मतलब BeCl2 के तीन रूप हैं, polymer, dimer and monomer. Polymer in the solid state, dimer in the vapor state and monomer in at a very high temperature. समझा? Okay. So आंसर ये था. अब इसमें रीजन क्या था, लेट्स अंडरस्टैंड. If we talk about MgCl2 का hydrated salt, it is MgCl2.6H2. अगर आप इसको हीट करते हो तो it actually undergo hydrolysis, wherein magnesium forms the hydroxide and the chloride forms the acid. So overall, there is a formation of the base and the acid, where acid being stronger, the solution actually becomes a basic solution, जिसमें the pH value is greater than 7. अब वही चीज जब कैल्शियम क्लोराइड के हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए करोगे ना,
तो यहाँ पर simply there will be anhydrous CaCl2 formed with the dehydration or the loss of water. ठीक है, तो यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, बट बाकी सारे सॉल्ट्स जो है वो डिहाइड्रेट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. Property of alkaline earth metals that increases with their atomic number is R. Increases. This already done, na? हाइड्रोक्साइड्स और फ्लोराइड्स की सल्यूबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, बट बाकी सारे सॉल्ट्स की सल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है. मतलब द सल्फेट्स हैव अ सल्यूबिलिटी व्हिच इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, खाली हाइड्रोक्साइड का सल्यूबिलिटी एंड फ्लोराइड का सल्यूबिलिटी इंक्रीज होता है. Which of the following compound has the highest melting point? अल्कली मेटल क्लोराइड्स में मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है? Rubidium chloride. If I talk about LiCl, then LiCl जो है it has more of covalent character. LiCl में covalent character ज्यादा है because of the Fajans rule and the polarizing power of the lithium ion with the anion chloride. ठीक है, और बाकी सब में ionic character है. ठीक है, और उन ionic character में the NaCl has very high ionic character and that is why its melting point would be very high. In fact, order of melting point of the halides क्या था उसमें? NaCl is greater than KCl is greater than RbCl and least आता है LiCl. अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हमेशा होगा बिकॉज आप अगर NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड को कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, RbCl हैज अ हायर मोलर मास, और हम बोलते हैं कि जितना मोलर मास ज्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, but that is only valid for covalent compounds. Remember, for ionic compounds there is electrostatic force of attraction between the ions, cation and anion. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मोलर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डजंट डिपेंड ऑन द मोलर मास. In fact, the force of attraction is dependent on the charge on the cation, charge on the anion का product and inverse to the square of the distance between them. तो जितना उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा और उतना ही हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा. So if you think with respect to molar mass, you will go wrong. And remember, ionic compounds का melting and boiling point is not decided by molar mass. It is in fact decided by the Coulomb's law, which states that the force of attraction is dependent on the product of the charges and inverse to the square of the distance between them. इसको बोलते हैं inter-ionic distance, and that's why NaCl का melting point highest होता है, followed by KCl, RbCl. In fact, theoretically LiCl का ज्यादा होना चाहिए, but because of the covalent character, LiCl is placed at the last, and this order is very, very important. इनफैक्ट अगर सीजियम को भी यहाँ पे डाल दो तो ये पूरा ऑर्डर हो गया अल्कली मेटल क्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट. The solubilities of sodium, beryllium, magnesium and barium sulfate will follow the order. Now, among the alkaline earth metals, beryllium, magnesium and barium, which is most soluble? Beryllium. बेरिलियम. तो इनमें तो बी, एमजी और बी ए का ऑर्डर क्लियर है. अब इफ आई टॉक अबाउट Na2SO4, ये अल्कली मेटल का सल्फेट है. Now in general, alkali metal sulfates versus alkaline earth metal sulfate, which is more soluble?
alkali metal. अल्कली मेटल ज्यादा सल्यूबल होता है। तो यहाँ पर if we compare Na2SO4 actually has the highest solubility followed by beryllium, magnesium and barium। ठीक है, सो दो चीजें याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप द सल्यूबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स गो ऑन डिक्रीजिंग एंड अल्कली मेटल्स जो है दे आर more soluble as compared to alkaline earth metal sulfates। Answer is D। Beryllium and aluminium exhibit diagonal relationship. Which of the following statement about them is or not true? Both react with HCl to liberate H2. True or false? Beryllium and aluminium show a diagonal relationship because of the similarity in their atomic and ionic sizes. So, in that which is not a true statement, वो पूछा है. Both react with HCl to liberate H2. अरे भाई, बेरिलियम एंड अल्यूमिनियम बोथ आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया दैट एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म द H2 गैस। मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर मेड पैसिव बाय HNO3। यस, अल्यूमिनियम को याद रहेगा तो इट कैन फॉर्म अ लेयर ऑफ अलुमिना ऑन इट्स सरफेस व्हिच विल मेक इट corrosion resistant। मतलब this metal can be made passive by the use of oxidizing agent HNO3। Their carbides give acetylene on treatment with water। Do the So, carbides of beryllium or aluminium give acetylene? तो क्या देता है? one gives methane, One gives methane नहीं, both gives methane। बेरिलियम का कार्बाइड B2C and aluminium का कार्बाइड is Al4C3। Here the carbide is C with a -4। तो जब हाइड्रोलाइज होगा तो C-4 4H को लेकर मीथेन बना देगा दोनों केसेस में। बट जैसे कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं, दिस हैज अ C2-2 अनायन, बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स एसिटिलीन। एंड तीसरा है मैग्नीशियम का कार्बाइड विच इज Mg3C4। तो यहाँ पर यह हाइड्रोलाइज करके C4-3 अनायन होता है जो प्रोपाइन बना देता है C3H4। सॉरी, Mg2C3। Mg, एक मिनट, C ट्रिपल बॉन्ड C single bond C -3 and -1, so it's -4 and this is +2। या Mg2C3 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द H प्लस एंड द 3H प्लस विल कंबाइन टू फॉर्म द प्रोपाइन। तो ये चार ही कार्बाइड्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड गिव्स मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड गिव्स एसिटिलीन, मैग्नीशियम कार्बाइड गिव्स प्रोपाइन। तो ये इनकरेक्ट है। एंड देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, ये भी करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट में 3 ओनली विल बी द आंसर। The conducting nature of solution of alkali metal in liquid ammonia is due to ammoniated electron, ammoniated cation, both A and B, या formation of sodamide। Sodium in liquid ammonia forms NaNH3 X with a plus, which is called ammoniated cation,
and ENH3Y with a minus, which is called ammoniated electron. इसमें बहुत सारी properties थी, which is very important. So when sodium is dissolved in liquid ammonia, it forms a blue-colored paramagnetic solution. And this paramagnetic solution is due to ammoniated electron. The blue color is due to ammoniated electron, but the conducting nature is due to both the ions, cation as well as anion. तो कंडक्शन का जो नेचर है वो दोनों की वजह से है. ब्लू कलर और पैरामैग्नेटिक सिर्फ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है. And if the solution is allowed to stand for a long time, it will finally break down to give sodamide and release hydrogen gas. ये था important points. तो आंसर है C. Which one of the alkali metal forms only the normal oxide on heating in air? Quick. lithium, लिथियम. तो अब यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, ध्यान देना. तो तीन तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं. वन इज द नॉर्मल ऑक्साइड, अदर इज द पर ऑक्साइड एंड द थर्ड वन इज सुपर ऑक्साइड. अगर पहले वाले को हम H2O में डिसॉल्व करें तो इट विल फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म जस्ट द हाइड्रोक्साइड, सॉरी. देन सोडियम का परऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड के अलावा परऑक्साइड अनायन के थ्रू H2O2 भी बनता है. और थर्डली सुपर ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट विल फॉर्म KOH प्लस. व्हाट इज आर द अदर प्रोडक्ट्स? H2O2 and वेरी गुड. तो यहां पर देखो, लिथियम का ऑक्साइड सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाता है. सोडियम का परऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के अलावा एक और बढ़ जाता है H2O2, और पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड में एक और बढ़ जाता है. तो हाइड्रोक्साइड सब में कॉमन है, और इंक्रीजिंग में H2O2 सेकंड में ऐड हुआ और थर्ड में O2 ऐड हो गया. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स. यहाँ पर मैंने रिएक्शन भी रिवाइज करवा दिया जो इंपॉर्टेंट है. Li and Mg exhibit diagonal relation. Which of the following statements about them is are not true? Both form soluble bicarbonates. Now lithium and magnesium का bicarbonate only exist in solution. Lithium and magnesium bicarbonates do not exist in the solid form. They exist in the solution only, and they do form soluble bicarbonates. ये correct है. Both form nitrites. Yes. Lithium in the alkali metals is the only metal which forms nitride, और alkaline earth metal में सभी बनाते हैं. Nitrates of both Li and Mg yields NO2 and O2 on heating. Yes, already discussed. अब जैसा लिथियम का बिहेवियर है वैसे सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बिहेवियर है. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. लिथियम का बाकी मेंबर्स के साथ अलग है, लेकिन लिथियम का डायगोनल रिलेशन तो है Mg के साथ. उसके अलावा बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बिहेवियर सिमिलर होता है. एंड बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स. नो, लिथियम का कार्बोनेट इज नॉट बेसिक, बट मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है that exists as MgCO3, MgOH twice and H2O. मतलब there is a basic carbonate which could be formed by the magnesium ion but not by the lithium ion. क्योंकि यहाँ पर लिथियम और कार्बोनेट के बीच में कैसे टाइप का बॉन्ड है? कोवलेंट. बट यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से इसका बेसिक MgOH twice का फॉर्मेशन पॉसिबल है. So Mg forms a basic carbonate, but lithium doesn't. Hence the answer is option D. Okay, match the column.
Okay, first one, Na2CO3.10H2O, washing soda, which is a correct match. Solvay process. It can be prepared by the Solvay's process. Magnesium bicarbonate, Temporary hardness. temporary hardness. NaOH is prepared by Kastner-Kellner cell. And tricalcium aluminate is one of the ingredient of Portland cement. So one matches with C, के बाद two matches with D. So the answer is option A. अच्छा, सीमेंट के रिलेटेड एक सिंपल सा समरी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताया था कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है दैट इज बेसिकली अ कॉम्पोजिशन रिमेंबर्ड एज क्लेम, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ क्ले, SiO2, lime, and oxides of aluminum, iron, and magnesium. Then, for a good quality cement, the ratio of silica to alumina should be between 2.425. 2.5 to 4, and the ratio of quicklime to the oxides of iron and magnesium should be as close as 2. 2. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्ले एंड लाइम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है एंड दिस फॉर्म्स अ सीमेंट क्लिंकर. क्ले लाइम मिक्स हो जाता है टू फॉर्म्स अ सीमेंट क्लिंकर एंड देन इट इज एडेड विद जिप्सम टू फॉर्म सीमेंट. तो फाइनली जब जिप्सम के साथ ऐड होता है तो यहाँ पर इट फॉर्म्स डाई कैल्शियम सिलिकेट Ca2SiO4, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5 एंड ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट Ca3Al2O6. तो जो 3 पैराग्राफ्स दिए थे उसको मैंने सिंपल वे में समराइज कर दिया है. दिस इज व्हाट इज रिटन इन NCERT पैराग्राफ. दैट इज हाउ यू कैन जस्ट समराइज अबाउट सीमेंट. Among the statements A to D, the correct ones are: lithium has the highest hydration enthalpy among the alkali metals. Correct. Because of the smaller size, it has the highest hydration enthalpy. And because of the highest hydration enthalpy, its reduction potential was highest. In fact, theoretically, reduction potential सबसे ज़्यादा सीजियम का होना चाहिए, बट एक्सेप्शनली लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था. इनफैक्ट ऑर्डर में लिथियम सबसे पहले आने का रीजन ही है इट्स हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी व्हिच डोमिनेट्स ओवर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Li. LiCl is insoluble in pyridine. Now how do you decide this, whether it is correct or incorrect? Covalent character. Yes, LiCl is a covalent compound, and being covalent, it can dissolve in non-polar solvents like pyridine. And straightforward ऐसा statement NCERT में दिया है कि LiCl is soluble in pyridine. मतलब ये correct statement नहीं है. This is correct. This is incorrect. Li cannot form ethynide upon its reaction with ethyne. Correct. अगर लिथियम को हम छोड़ दे तो बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो इथाइनाइड बना सकते हैं, बट लिथियम बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर डू नॉट फॉर्म इथाइनाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिटिलीन. मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ थियोरेटिकली HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस जैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट ऐसा लिथियम के साथ नहीं होता है. दो रीजन, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई polarizing power. And both Li and Mg react slowly with water. Yes.
बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, इनफैक्ट रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ते जाता है, इसीलिए यहाँ पर Li और Mg बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं. Next statements will be A, C and D only. And last, see, some of the questions I have made it by myself so that it can cover the important content along with the MCQ. मतलब आप इतना भी रिवाइज करोगे तो सारे जो important trends या exceptions हैं वो यहाँ पर मैंने कवर करने का ट्राई किया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना. Which of the following order about alkali metals is incorrect? First, order of wavelength of emitted radiation. Now, when the alkali metals are burnt in the Bunsen burner, they exhibit various colors. और वो कलर अगर हम देखें LiNAKRBCS can be remembered as cry verb. Cry verb. मतलब lithium shows a crimson red color, sodium golden yellow, potassium violet, rubidium red और cesium blue. तो ये colors जो है that is basically because of some wavelength which is emitted. When it is burnt, it actually has the electron excited in the higher energy level, and while coming down it will emit some radiation. तो जो wavelength of radiated emission है that is in the order रब के लिए ना सेस. इसका order याद रखो, रब के लिए ना सेस. सेस मतलब टैक्स जो होता है भाई, रब के लिए टैक्सेशन इतना हैवी मत करो. That is how you can remember the order of wavelength of emitted radiation. रब के लिए ना सेस. ठीक है, तो इसका मैं वैल्यूज भी आपको बताऊंगा, बट ये एक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स करेक्ट. देन अबाउट डेंसिटी, इज दिस द करेक्ट ऑर्डर? What is important to be remembered in the density order? Potassium is lesser than sodium. Potassium has a density lesser than sodium, an important exception. Down the group density बढ़ते जाता है, लेकिन sodium and potassium में exception था. And potassium is having a low density because of the vacant d orbitals का concept. A very important order with exception. Then order of melting and boiling point down the group goes on. डिक्रीजिंग. Li का जो लेटाइज स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विदाउट एनी एक्सेप्शन. सिंपल ऑर्डर एंड इट इज करेक्ट. ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम. यही इनकरेक्ट है ना, because lithium as an exception has the highest reduction potential. तो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए लिथियम के बाद सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड सोडियम. यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल जो ट्रेंड्स है वो मैंने इस एमसीक्यू में कवर करने का ट्राई किया है. ओके, लुक एट दिस. दिस इज द मेटल, उसका कलर एंड द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन. अगर वैल्यूज को देखोगे तो रब यानी रुबिडियम का सबसे ज्यादा है, और उसके बाद का जो ऑर्डर है उसको याद रखो, रब के लिए नासेस, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन. द आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर? Understood. Yes, sir. Okay, so this about 38 MCQs I have discussed, and I think I have covered most of the important trends with their exceptions, and जो थोड़े बहुत concepts थे जो आपको याद रखना है इन दो chapters में से, वो मैंने cover किया. See, नीट के लिए इन दोनों chapter में से one question each आता है, और जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन में से हर साल आया है. हाइड्रोजन में से बहुत ईयर्स में क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है. मतलब ओवरऑल वेटेज वाइज दीज आर नॉट द चैप्टर्स व्हिच हैज अ वेरी हाई वेटेज.
So if you do the chapter in a way that it covers all the important trends with exceptions and the important reactions or the processes name, then you are through with these 2 chapters. ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार गो थ्रू करो, जो जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है जहां पर आपको एक्सेप्शंस को याद रखना है उसको हाईलाइट करो, 2-3 बार लिखो एंड ट्राई टू रिमेम्बर इन अ सिंपल मैनर। ठीक है, तो उतना करोगे तो ये 2 चैप्टर्स तो आपके आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, I'll share the PPT with you all so that you can go through these MCQs once again for your revision. Fine? Yes, sir.